Welcome back, Bhailog, to the fourth part of the Biomutant series. अगर आपने the previous parts नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा. हम लोग ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. और अनदर थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है. तो चलिए मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था. प्रीवियस पार्ट में हमने ये मेरिया ट्राइब को ज्वाइन कर लिया है और अभी हम लोग एक एनिमी फोर्ट्रेस को कैप्चर करने जा रहे हैं और उसी पे हैं. चलो चलिए शुरू करते हैं. नो इशू. यही था. यस, स्टार्ट करते हैं. मैंने गेम पैड लगा के खेला. मैंने गेम पैड ख़रीद लिया है. गेम पैड आ गया, आज ऑर्डर किया था, डिलीवर हो गया. तो अभी मैं गेम पैड लगा के खेलूँगा. पता नहीं, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा गेम पैड से एडजस्ट होने में. बहुत दिनों के बाद मैं गेम पैड में खेलूँगा. ज़्यादातर मैं कीबोर्ड में ही खेलता हूँ. सो लेट्स सी कैसा रहता है. थोड़ा टाइम लगेगा. एक आध बार ज़्यादा मरूँगा अभी शायद. देखते हैं कैसा होता है. थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. ओके, तो हम लोग इधर आ गए. ये वाला तो Do you feel safer or more exposed in the dark? थोड़ा साउंड कमा देता है. Let's see. मैक्सिमम इतना जूम हो सकता है. ठीक है, चलिए. चलो, ये तो ऑलरेडी मार्क हो चुका है. They're ready to enter the outpost when you are. Every step you take toward... Here's the first line of defense. That's a bomb lobber. Oh my. इधर ही अटक गए थे. ओह, थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा. कैमरा एडजस्ट करने में इधर कुछ लगा है क्या? डॉज डॉज भाई डॉज. अरे जो लेवल अप कर लेता हूँ पहले. देखते हैं. मिली डैमेज, एनर्जी, क्रिटिकल चांस 10, लोड चार्ज 6%. इस बार लक ले लेंगे. अपग्रेड पॉइंट्स हमारे पास 2 है. बायो पॉइंट्स भी 2 है.
बाद में देखते हैं। That hit the spot. Wrecked it. ओके, अभी समझ गया। एक्स That दिखा रहा है, twirly मारना है। wheel works ओके, that drain pipe. उसको हिट करने से बाउंस बैक कर जा रहा है। ओके, सही बचेगा। ओ मैंने इसके इधर में फंस गया था पिछले बार। Spin the twirly wheel and open that drain. RBLB Just a few moves left. Make them count. हो गया। Everything's clocking together. पानी के अंदर से स्विम करके Maybe this key will do it. Keep going. That cage is holding a helper. ओके, ठीक है, चलो। एक दूसरे में लड़ते हैं। So cool man। कैमरा थोड़ा संभालने में मुश्किल हो रहा है गेम पैड में। जो ये बहुत दिनों का थोड़ा awkward लग रहा है। बाकी सब सही है, बस थोड़ा कैमरा मूवमेंट्स डिफिकल्ट है। उसको बचाना है वो इंटरनेट। सॉरी अगर कैमरा मूवमेंट ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। I'm trying my best to control the camera. They never lost hope you'd come, but weren't sure if they'd last long enough to see it. Says the tribe's been hard on them. Return to the Wants revenge on those who caged them, but trust you'll take care of it. इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या मिला? ओह ऑसम, एक्स्ट्रा मिनो
further upstairs, it rifle damage 85 to 118. Okay, armor pierce और फायर रेट थोड़ा कम है, एक्यूरेसी इसका बहुत अच्छा है, सही दिख रहा है गन टू। नाइस। कैसे चूज कर सकते हैं? ठीक है, खाली ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उसी वही वेपन मिला। लो वेपन अभी के लिए चूज करते हैं। A sharpshooter. The scaffolding looks unstable. Oh man, राइफल उसी लिए मेरे पास। Here's the second line of defense. पहले उसको उड़ाना पड़ेगा। Better stay clear of the red ray. Red means danger. कैमरा समझ में नहीं। और यार कैमरा एंगल पूरा बिगड़ जा रहा है मेरा, माउस में बहुत सिंपल करता है। तो मैंने हील कर, ओके वाइब्रेशन मॉडल कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका। आज का पहला मिनी बॉस मेन फायर
Bet a big bump will bring it down. Switched off the light. A barrel shoot. Smack it to get a barrel out of it. Then hit it toward the gate and blast it. That looks splody. Shoot it and watch it blow. Not too close, though. Kaboom! You're in. Almost there. Nice. The outpost belongs to your tribe now. Nice. He says you made them weaker, but they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. ओपोनेंट ट्राइब का जो सीफू है ना और डॉग जैसा दिख रहा, कुत्ता ऐसा दिख रहा। Outpost shops are now open. Okay, merchant shop. सीफू पूरा राजा ऐसा आ रहा है। ट्राइब weapon unlocked. Boomerang. Oh, boomerang is a knife. Each tribe has its own tribal weapon. If you defeat a rival tribe, you will acquire its weapon. By helping your own tribe, you will acquire its weapon. Okay, got it. You are now allied with a tribe. You can decide to switch your allegiance and ally with a different tribe. Okay. Go to a tribe fort and talk to their Sifu to change your allegiance. Says you did a great job capturing the outpost. You've earned the privilege of carrying the tribe's weapon. Figures the honor belongs to the tribe, too. Out of Date says he's doing his best to keep up, but from what he can tell, it seems you're making progress with the tribe conflict. He had a feeling you'd get along with the Myriad tribe, but it remains to be seen what the future holds for your alliance. You seem... But Out of Date emphasizes that solving the tribe conflict won't matter unless you help make a stand against the World Eaters. That doesn't sound good. Out of Date's forebodings are justified. The Jumbo Puff needs to be taken care of. Jumbo Puff पहला World Eater है क्या जिसको हम लोग मारना पड़ेगा? He says the time has come to confront the Jumbo Puff at the end of the West route. Gizmo is working on making his Mekton strong enough to endure the oxygen-deprived dead zone all the way out to the World Eater. Okay, पहला World Eater लड़ने जा रहे हैं. You should get over there and see what you can do to help. ठीक है. देखते हैं Kung Fu. New Kung Fu. क्या ले? Okay, super info. Turtle Slam. AX. Maybe most rapid shot. Oh man, Max Payne जैसा मारा slow motion में. काफी cool है. Input sequence RT. Clonk bonk. Hit enemies with clonk. Clonk fish with it.
BXRT। दोनों सही है। Finish the range weapon chain with 2 devastating shots. Burst of rapidly fire a burst of bullet after double jumping. Okay, finished a range weapon with 2 devastating shots. Okay. I think ये सही रहेगा, ज़्यादा यूजफुल है। बिकॉज हम लोग जंप करके कोई भी डायरेक्शन में डबल जंप करके कोई भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हैं। चलो ये लेता हूँ वीडियो। जर्नल क्या है? Visit Gizmo. Gizmo is a squibs. Gizmo is short for squibs, the dangerous little critters that become munition of Mekton guns. चलो बाद में देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। साइड क्वेस्ट कुछ साइड क्वेस्ट करना है। 337 meters हो सके तो मैप। New days always start with hope. फाइंड ए माउंट। भाई माउंट तो चाहिए। चलो माउंट चलते हैं, माउंट लेने चलते हैं। ये लोग इधर बोल रहे थे स्टॉल्स बैठा है, स्टॉल्स बैठ गया क्या? स्टॉल्स खरीदने के लिए शॉप्स जो बोल रहा था, कहीं दिख तो नहीं रहा है भाई। ओ देखते हैं लोग से इंटरेक्ट करते हैं क्या है। Some civilians have information about secret locations nearby. You can try to ask for information, but it is not likely that they will give up unless you make use of one of your main attributes. Chances that they will give up information is much higher. Okay. Oh. Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. Sparkles about how brilliant. Seems surprised you have to go. बाद में आके देखते हैं।
guns. Says the shop holds something for everyone, especially you. Wants you to know you won't find a better deal anywhere else. Each vendor is specialist on a particular type of items: melee weapon parts, ranged weapon parts, gear parts, clothes, or mounts. Going to vendors and browsing their stocks can be a great way to find better parts for your gears. If you're missing a specific part to craft a weapon, you can always check the nearest vendor. ठीक है? You can purchase the items from the vendors provided you have enough green currency. हाँ, ठीक है. Okay. Currency in the form of leaf. Okay. The price of an item is listed on the right. Okay, ठीक है, समझ गया. Green is gathered from specific bushes or by selling item. Oh, पैसा के झाड़ मिलते हैं. Green is gathered from specific bushes. Enough green. Green is the currency, right? Buy or sell. Here. Okay. और कुछ है क्या? जीरो पैसा है. सेल करते हैं कुछ. टूल्स में क्या है मेरे को? सॉलिड स्टफ बैग. Claims to have strange things from the dead. Thinks you should practice patience if you want to make a good deal here. थोड़ा देखना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग का. क्राफ्ट डिटेल्स में, क्राफ्टिंग में. इधर एक माउंट है. इसको नहीं, पैसा तो है नहीं हमारे पास. खरीदेंगे इस माउंट हम लोग. अरे निकलना है 10% निकलना. Oh. भाई मैं खाली गोल गोल घूम रहा हूँ इधर. बाहर जाना है. How many days like this do you think the world has left? यार रुक जाओ, मैप देखने में. सेट वे पॉइंट नहीं है.
थोड़ा रुक। Controls. Mapping. LS. There is very important thing. So this guy to approach. Better get moving before the day passes you by. अरे यार इसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. सॉरी फॉर डिलेइंग. थोड़ा मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है कंट्रोल से एडजस्ट होने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर घूमूंगा. वाओ. That's a gnote. Easy prey for Looper Lupin. For everyone else, they're a perfect mount and easily tamed if they are kept fed. Okay. You can move and shoot while mounted. The mount will stay where you left it if you dismount. Acquired mounts appear in each slot of your transport menu, apart from the top slot which holds the mount selected in your transport menu. Okay. If you call your last used mount to your current position, press downwards. Okay, got it. अभी हमें कहाँ है ना कुछ जो मैप चाहिए. ठीक है, मैप देखते हैं. ओके. कुकी अजूरे नोट. ठीक है. नहीं, पहले मैप पे मार्क कर देते हैं. Place waypoint. It's a ride, not a friend, right?
ब्यूटीफुल लग रहा है। I think we are here. Dismount कैसे होता है? The board mainly has posts from those that used to work at the chug yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that Mekton of his. The Toxanol Corporation used to run chugger-chuggers out of here, big machines on rails with smokestacks that fouled the air. They can carry you anywhere you like. Well, anywhere that they go to, and then you can leg it from there. What you do here matters to you and the world. इसको इक्विप करते हैं। This box once tailed a chugger-chugger. Now it's just off track. Look at that! Right in the chug yard! Follow the rails and you'll find all sorts of little treasures scattered all over the place. Who do you think? You're not the first wanderer in these parts. Tribes always scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stuck to looting instead of playing around with sprockets. Slash and dash. भाई इधर बहुत ज्यादा है यार।
Bomper Bonker's busy ram-banging the door. This is your chance. Right between the eyes. You're low on health. Feels like a river runs through you. Slash the slash. क्या ब्लॉक है? Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Wow, you really took that all the way down to the end, in flames. Let's see. It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past. काफी मस्त है यार, मतलब फाइट तो काफी अच्छा था. The spent nuclear fuel that Toxanol dumped in the surf had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. Okay. As usual. As expected. Yeah. I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. Oh, and he says he knows you. You used to call him Gizmo. He gave you the oil-greased hands when he taught you how to upcycle. Gizmo remembers you as a nice kidling, and he can still sense the warmth of your good heart. He hopes you remember that one time he taught you to upcycle, and hopes you've had some use for it over the years. He understands history made Lupa Lupin a big part of your past, your present, and soon, your future. You still believe there's some good in everyone. You still have hope for tomorrow. He says you should know that what's meant to be will always find a way, but history shouldn't consume you. Gizmo understands you still have strong feelings, but urges you to keep them under control. You've witnessed firsthand what it'll lead to. Yes, that's the way. No arguing with that. That is how you shine light at the dark. Seriously, don't doubt the dark. Oh, I'm so proud of you for doing the right thing. can't believe you let that loser sway you. Hard to believe the world is actually going to survive. Just seemed impossible till now. Grateful to you for coming back and doing your best to change things. You were the only chance they had.
धीरे धीरे Wonders से if you सीख रहा liked हूँ, working with the एडजस्ट हो रहा है myriad. They always seemed so centered and so seeking. Well, I value by you. But that's not important now. What? Gizmo says it's taken a long time to bring the past up to the present, and where you go from here is up. He can't leave the underyard as he has no protection against the vacuum in the dead zone. So you need to salvage scrap to upcycle the Mekton, starting with the old crate outside. Fruit? Okay. Typo? You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the Mekton गिज़्मो strong वो enough आदमी to है जो हम fight लोग the इसके jumbo विलेज puff. में मिले थे, जो हमें क्राफ्टिंग सिखाया था, वही है गिज़्मो। जो हमें पहले बोला था ना, कचड़ा कलेक्ट करो, फिर वो उससे फिर हम लोग क्राफ्ट करने का सिखाया था, वही विलेज में जो मिले थे वही है ये। Where is the dead zone? It's the part of the land that suffered most from the apocalypse. It's deprived of oxygen, making it next to impossible for anything but creatures that were most contorted by the contamination. Oh yeah, Mekton. This story is as powerful as you'll let it be. Oh, Looks like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. ठीक है। Just a few moves left. Make them count. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. मिल नहीं रहा, इधर क्या है? वो एक दिखा रहा है ना, सिग्नल टाइप दिखा रहा है, तो सिग्नल के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। मेन क्वेस्ट बाद में करेंगे, एक सिग्नल टाइप दिखा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, बाहर चलता है। तो लिफ्ट है। चलो निकलता है डेड जोन के लिए। Yeah. The future is in your hands, so take care of it. क्राफ्टिंग में और एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, एक बार क्राफ्टिंग मेनू खोल के देखता हूँ। क्राफ्टिंग में किया नहीं हूँ ढंग से। क्राफ्टिंग ये गेम का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट? हेड के लिए मेरे पास क्या किया है? Can scrap the highlighted piece of gear for crafting resources by pressing Y. Okay. ओके, इसमें हमें थोड़ा आर्मर मिल रहा है। ओके, 6 एक ज़्यादा आर्मर है, ठीक है। तो एक 1 एक्स्ट्रा आर्मर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टोर्सो का कुछ है, तो एक ही है।
इसमें कुछ नहीं है। या कुछ क्राफ्ट करते हैं। Rough and tumble. लूट इंक्रीज कर लेते हैं। वैसे भी हेल्थ पैक थोड़ा कम मिल रहा है, ज़्यादा सही रहेगा। ये नेसेसरी है, ये वाला नॉकआउट वाला जो फर्क है। तो ये वाला किस पे लगा है? हमारे पास गियर है ना? ये समझ में आया, गियर में इसमें लगा नहीं सकते क्या? इसको किस में लगाना है? मॉड कैसे लगाना है वो सोच रहा हूँ।
छोड़ो, चलते मालूम है। There's short of breath and death to this zone. Better take care. He who half breathes, half lives. We have discovered a hazard zone. These zones are vast areas covered in deadly hazards. You can only withstand the hazard for so long before it kills you, so be careful. Okay. Uh, Hazards come in several types: biocontaminated, cryogenic, incendiary, radioactive, and oxygen deprived. Dead zone. Okay. ठीक है, हमारा तो बायोहजार्ड का आई थिंक बायोहजार्ड का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। Your gear and your resistance. Your gear and your resistance you choose during character selection determines how long you can survive in the hazard zones and how much damage you take from hazard weapons. With resistance of 100 to a type of hazard, you resist 100% of the damage from the hazard. Okay. हमें उधर जाना है। That's the leftover you're looking for. Okay. Yeah. इधर कुछ नहीं है क्या? You're maybe not sure you want to leave. भाई बहुत बहुत दूर में है। अरे बाप रे, ऐसे ही ऐसे मर गया। शिट यार, इसमें बैलेंस कैसे करना है? रुकना धीरे धीरे जाना है क्या? ज़्यादा जल्दी चलने से गिर जा रहा हूँ। ठीक है। काफी सही गेम है। Take a good look around you.
100% होने से डायरेक्ट मर जाएगा। ओके ठीक है ओके 100% नहीं होने देना। मुझे लग रहा था कि जब तक धीरे धीरे हेल्थ डिक्रीज हो रहा था, राइट? तो मुझे लगा था जब तक हेल्थ हमारे ज़ीरो नहीं होता तब तक सही है, पर ऐसा नहीं है। वो एक बार टॉक्सिसिटी या जो भी ऑक्सीजन डिप्रेशन लाइक अगर वो 100% रीच कर जाता तो देन ऑल्सो ओके। Got it. The top of the world is so low down here. भाई हम लोग तो ऑलरेडी ये कर लिया था, फिर भी Look up, not down. मैं एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। Stay away from that biohazard. You'll want to wash yourself off for a month. बच गए भाई लोग, बच गए। ओके उसका कुछ नाइस सेव हो गया हम लोग का। कितना दूर है रिटर्न टू गिज़मो? बाहर निकलना पड़ेगा। Never take air for granted again. रुक जाओ मैं थोड़ा देखता हूँ मैप। Oh, nice. देखते हैं Mekton. He says that's enough to get the Mekton functional. You'll have an engine, a fuel soaker, a gun and a gathering net, but no armor, nor enough oxygen supply. He made a suction device so the Mekton can use the black tar as an instant refuel.
You can also use it to clear oily goo puddles, so you can pass and access hard-to-get-to areas. Nice. How convenient. He's been working on another project for the Mekton, a cannon, but it needs ammunition, and by that he means the scripts. He says if they're trained right, they'll turn into a distraction for the jumbo puff. The best way to find scripts is to go talk to Moog. He knows the ins and outs of every breathing thing left alive after the apocalypse. Unfortunately, this means you'll have to venture farther out into the dead zone than Moog's camp on the steep depot. Once you find Moog, he'll be able to give you directions to where you'll find scripts. It's a little feisty and tough critter, a perfect fit for a live ammunition, if you ask him. If you to customize Mekton, jump on it and use the call mode. Okay. ओके इधर सेव हो चुका है भाई Mekton can't cross the oily pores, but you can use it to remove the oil. Just okay to move it closer. Okay. Impressive. Got it. ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं आज थोड़ा मैं टायर्ड भी हो गया हूँ क्योंकि मैं जॉब के बाद जॉब जस्ट ख़त्म हुआ मेरा काम के बाद मैं अभी ये गेम खेल रहा था तो ओके तो आज के लिए इतना ही रखते हैं चलो सही है ये अच्छा पॉइंट है नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए ओके चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही Is that a ray of hope? टेक केयर बाय बाय